मैंने मेरी कार स्टार्ट की, फर्स्ट गियर में ली, ओके स्पीड दिया, फिर सेकंड गियर में ली, फिर और स्पीड दिया, थर्ड गियर के लिए और ज्यादा स्पीड दी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी चेंज कर रहा हूँ, है ना, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज कर रहा हूँ, तो मेरी गाड़ी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। सो आई कैन से इट इज एन एक्सेलरेशन। और फिफ्थ गियर के बाद मेरी गाड़ी पूरी एक्सेलरेट हो जाएगी। उसके बाद मैं गियर चेंज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ गाड़ी को एक्सेलरेट करूंगा। ओके, जो एक्सेलरेटर जो पैडल होता है हमारी कार में, मैं उसको उसके ऊपर पावर रखूंगा, गाड़ी को एक्सेलरेट करूंगा, राइट। ओके, दैट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड सीजीएस यूनिट, सीजीएस मीन सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के अंदर जो यूनिट है उसकी वो है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां से आया भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो आपको पता होना चाहिए, ये जो इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां से आया। नाउ सी, हमको वेलोसिटी की डेफिनेशन पता है, व्हाट वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। बट यहाँ पे दिया हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, टाइम में क्या होता है सेकंड, अब यहाँ पे क्या है 1। अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ये तो आपका वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये है विद टाइम, वो आपका ये है टाइम, ओके सेकंड। इसके नीचे वन लिखो नहीं लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। इसको ऊपर लेके तो क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड इनटू 1/s, दैट इज meter per second square. So the unit of acceleration is meter per second square. Okay, it is clear. इसकी यूनिट कहां से है आपको ये पता होना चाहिए। ओके, सो in each and every numerical we have to convert kilometers per hour into meter per second, so to have a proper unit of acceleration. Now see, what is the formula? The formula is very simple, change in velocity by time taken, final velocity. For example, आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, अब स्टार्ट किया तो आपकी गाड़ी क्या थी, रेस्ट, रेस्ट थी, तो मतलब आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, तो इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, तो उसको हम डिनोट करते हैं u से। ओके, u मींस इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मींस v, v मींस फाइनल वेलोसिटी। आपने जब कार को स्टार्ट किया तो आपकी गाड़ी रेस्ट पे थी, ओके, उसकी स्पीड क्या थी 0। आपने फर्स्ट गियर लगाया, एक्सेलरेशन दिया, फर्स्ट अगेन सेकंड गियर लगाया, फिर गाड़ी को एक्सेलरेट किया, तो इस तरह से अभी आपकी गाड़ी की स्पीड हो गई आपका फिफ्थ गियर 50 किलोमीटर पर आवर। तो अभी आपकी फाइनल वेलोसिटी दैट इज v, वो कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। और ये कितने टाइम में हुआ, तो ये आपका हुआ टोटल 10 सेकेंड्स में। इन हाउ मेनी सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। आपने देखा होगा ना स्पोर्ट्स कार का स्पेसिफिकेशन आता है, it catches up to 100 kilometers per hour in 10 seconds, in 5 seconds. ये 6 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, 5 सेकंड के अंदर 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है, राइट। इस तरह से आपने देखा होगा कार के एक्ट में, राइट। तो ओके डन। नाउ द फॉर्मूला इज v minus u upon t. V is the final velocity, minus u is the initial velocity, and divided by t. Now acceleration is meter per second square, velocity is meter per second, again initial velocity is meter per second, and time is always in second, we know that. Okay, so very simple formula. Now when a body is moving with uniform velocity, its acceleration is 0. Now see how its acceleration is 0. फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट गियर में गाड़ी चला रहा हूँ और मेरी उस समय स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 किलोमीटर पर आवर, अब जब मैंने 5 किलोमीटर पर आवर है, राइट, कुछ देर के बाद देखा आपका 10 मिनट्स, तब भी मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। और मेरा एक्सेलरेशन 0 कैसे हुआ, अब मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 5 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी क्या थी अगेन 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, तो 5 माइनस 5 0, 0 डिवाइड बाय 10 0, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन मेरा क्या हुआ 0 हुआ ना,
क्योंकि मेरा वेलोसिटी तो चेंज हुई नहीं, वेलोसिटी चेंज होती तो एक्सेलरेशन होता। मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही गाड़ी चला रहा हूँ, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या हुआ, जीरो। एक्सेलरेशन क्या हुआ, zero. Okay. Now we have four different types of acceleration. First is uniform acceleration. Uniform acceleration means a body has a uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amounts in equal interval of time. जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है इक्वल अमाउंट में, है ना, मतलब हर 5 सेकंड में हर 5 किलोमीटर की पर आवर की रफ्तार में ले रहा हूं, तो मैं क्या हो रहा है, इक्वल अमाउंट में अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा हूं, और भी हर 5 सेकंड में, तो मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रिमेंबर हमने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। तो इसमें है वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट, तो इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी इंक्रीज होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसका फर्स्ट एग्जांपल है the motion of a free falling body, the motion of a free falling body. Now see in the figure, a lady is dropping the ball from a top of a hill. The ball straight आ रही है, right? अब कहा ना यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा है, मतलब बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बॉडी यहाँ पे क्या है, बॉल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब नीचे आ रही है स्ट्रेट, राइट। इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, अब जो वेलोसिटी है बॉल की वो इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ हियर इज द सेकंड एग्जांपल, द मोशन ऑफ अ बाइसिकल गोइंग डाउन द स्लोप ऑफ अ रोड when the rider is not paddling and wind resistance is negligible. So sometimes it happens with you also. आप लोग साइकिलिंग करते हो, जब स्लोप आती है तब अपनी आप पैडलिंग करना क्या कर देते हो, बंद, और विंड, जो विंड का रेजिस्टेंस है, जो हवा चल रही है वो बहुत ही नेग्लिजिबल चल रही है, तो उसका रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। देन व्हाट विल हैपन, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली। क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली by equal amount in equal interval of time. So बोल सकते हैं that the motion of a bicycle going down the slope of a road and the rider is not paddling. अब इस कंडीशन में आप क्या पैडल करोगे, नो, क्योंकि आपकी साइकिल तो अपने आप ही नीचे जा रही है विद equal velocity in equal interval of time, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और द थर्ड एग्जांपल, the motion of a ball rolling down an inclined plane. एक स्लोप से मैंने बॉल को छोड़ दिया, and the ball will accelerate with uniform velocity, means the velocity will come in straight line. Okay, by equal amount the velocity will change in equal interval of time. So I can say that the motion of a ball is an example of uniform acceleration, right? Now the things come, velocity time graph of uniform acceleration. We have already studied that uniform motion का time graph कैसा था, straight line, कैसा था, straight line, right? So in this case also same velocity और time. Now see here, जितनी यहाँ पे velocity बढ़ी उतना ही time बढ़ा, in equal interval of time the velocity increases by equal amount. So I can say that whatever graph we are going to obtain from time and velocity is a straight line, that is a uniform acceleration, that is a uniform acceleration. Okay, now non-uniform acceleration, we have not already पढ़ा हुआ that non-uniform motion, right, when the body does not cover equal distance in equal interval of time. हमेशा नोटिस करना जो टाइम का इंटरवल है वो हर कंडीशन में इक्वल होता है, तो बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करती है, राइट। Similarly, non-uniform acceleration की definition क्या है? A body has a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amount in equal interval of time. Right? Means कभी ज्यादा कभी कम, कभी velocity एकदम कम हो रही है कभी हो रही है, मतलब मैं कभी गाड़ी चला रहा हूँ, for example if I am driving a car in a crowded place like छोटा पुल पता है कितना होता है crowded, वो भागल का 4 रास्ता है, छोटा पुल is so crowded place, तो वहां पे कंटिन्यूस आप एक में गाड़ी चला सकते हो, नो, यू कैन नॉट ड्राइव योर कार इन एनी वन ऑफ द गियर बिकॉज ऑफ इट इज अ क्राउडेड प्लेस। ओके, आपने फर्स्ट गियर में डाली, फिर रोड खाली मिला, फिर सेकंड में आ गए,
फिर से कोई आ गया सामने, फिर फर्स्ट गियर में आ गया, तो व्हाट इज हैपनिंग? Your velocity is not increasing by equal amount. Your velocity is increasing by unequal amount. But the time intervals are equal. Okay, that's why it is called non-uniform acceleration. Now see, velocity time graph of non-uniform acceleration. Velocity time graph of non-uniform acceleration. So how it will be? It's a very simple. Now see, in this case, for example, if I draw over here, and the body is over here. Now velocity इतना increase हुआ जब time इतना था. Time is, the time interval is equal. The equal interval of time, the velocity is not increasing by equal amount. Okay, time interval तो equal है, but velocity equal amount से increase नहीं हो रही. That's what is called non-uniform acceleration. Now next is positive acceleration. It's an interesting topic related to our daily life also. Okay. Now, the velocity of an object increases with respect to time in the same direction. For example, एक particular direction में किसी भी body की velocity increase हो रही continuously. Okay, in the same direction with respect to time. Time के साथ साथ किसी particular direction में किसी body की velocity increase हो रही continuously. तो उसको क्या बोले? हम उसको बोलेंगे positive acceleration. Now see in this graph, the graph of a position and time. It is a graph of positive acceleration. Now see, here the velocity is continuously increasing. तो जब line ऊपर जा रही है तो मतलब increase हो रहा है, continuously increase हो रहा है, right? और straight line में body move हो रही है with increasing velocity with respect to time. क्या हो रहा है? It's an example of positive acceleration or a graph of positive acceleration. Okay. Now, the graph which you've seen for the uniform acceleration, it is also a graph of positive acceleration. Why? Because the body, in that case also, the velocity is increasing uniformly and only in one direction. Okay. Now see, one of the most common example. For example, now see in this case, a rocket. A rocket is traveling into the space. Okay. Now in the case of rocket, when the rocket is launched, it's going straight up in the sky towards the space in a straight direction. So in this case, the velocity of the rocket is increasing and continuously increasing, right? With respect to time and the same direction. Direction change हो रही क्या? नहीं. तो हम क्या बोलेंगे? It is an example of positive acceleration. With positive acceleration होना मतलब velocity continuously increase हो रही है with respect to time. तो हम बोलेंगे positive acceleration, right? Now in the next example, see. The two persons are falling from sky. They are doing the skydiving. Okay. Now those two persons are falling towards the earth with a speed of 50 meters per second. They continuously straightly नीचे गिर रहे हैं. और speed कितनी है इनकी? इनकी speed है 50 meters per second. Now this velocity is continuously increasing with respect to time. It is not going to stop. Why? Because of gravitational pull of earth, right? So those persons are falling down, means moving down towards the earth, towards the center of the earth with a speed of 50 meters per second. So I can see that it is an example of positive acceleration. So continuously velocity बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, right? Next we are going to see that negative acceleration. Negative acceleration क्या होता है? Okay. Negative acceleration or deceleration or retardation means what? The velocity of an object decreases with respect to time in the same direction. For example, if you're going with the speed of 50 kilometers, okay, or for example, एकदम से अचानक बहुत सारा ट्रैफिक आ गया, पहले कम ट्रैफिक आया, फिर थोड़ा ज्यादा आया, फिर थोड़ा ज्यादा आया, तो आप क्या करोगे? कंटिन्यूसली ब्रेकिंग करोगे. 50 से स्पीड 40 हुई, 40 से 30 हो गई, 30 से 20 हो गई, 20 से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप आ गए. तो आपने कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन द सेम डायरेक्शन. डायरेक्शन तो सेम है, बट वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन द सेम डायरेक्शन. सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. मींस आप जब ब्रेक लगाते हो तो आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाता है.
या आप जब ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हो तब आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन स्टार्ट होना हो जाता है, राइट। या आपका ब्रेक लग जाता है, गाड़ी रुक जाती है, मतलब आपकी गाड़ी नेगेटिव एक्सेलरेशन में आ गई या डी एक्सेलरेशन में आ गई या रिटार्डेशन में आ गई। Now see in this graph, when the position of the body, now see, when the car is over here, now in this case, the car is that position and traveling in a straight line. But now, continuously, the car is applying a brake, and after a few seconds, it comes to zero. Means it is an example of negative acceleration, or is a graph of negative acceleration or deceleration or retardation or retardation. Now we are going to see examples. Now see what happens when suddenly when a person is falling down towards the earth without parachute, means it is in the positive acceleration. But suddenly when it opens the parachute, now what happens? जैसे ही इसने पैराशूट खोला तो उसकी स्पीड क्या हो गई? अब देखो, पैराशूट खोला तो एयर के रेजिस्टेंस ने उसको ऊपर मूव किया। जो पहले उसकी स्पीड कितनी थी? When he was falling down without opening the parachute, 50 meters per second. अब जैसे ही उसने पैराशूट खोला तो उसकी स्पीड हो गई 8 meters per second। मतलब एकदम से ब्रेक लग गया स्पीड को, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन। अभी ब्रेक किसने लगाया? ब्रेक लगाया हवा ने। अब जो एयर थी वो इस पैराशूट के अंदर भर गई और इसकी स्पीड क्या हो गई? स्लो हो गई। क्या हो गई? स्लो। मतलब ये क्या हो रहा है? डी एक्सेलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये डी एक्सेलरेट हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है? ये डी एक्सेलरेट, and slowly he will land to the ground, and slowly he will land to the ground. Now see, in the case of uniform acceleration, or when the velocity is always changing at uniform rate, तो उस समय एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? उस समय एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? नॉर्मली हमने एवरेज वेलोसिटी क्या पढ़ा है? अब एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मली? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। But when the velocity of the body is always changing at uniform rate, जब uniform rate पे velocity से body change हो रही हो तो उस समय average velocity निकालेंगे initial velocity plus final velocity divided by 2. Okay, means u plus v by 2. But in the case of when the body is changing its velocity in uniform rate or at uniform rate. Okay, all of you are getting me? It's very simple. Okay. Now, we are going to do some numericals based on acceleration. They are very, very easy. Okay. Try to concentrate on the numericals. And I'm going to share my screen one by one for the numericals. See properly. They are very, very important. Okay. First, I'm going to share my this metal. Now see over here, all of you. A train accelerates from 36 kilometers to 54 kilometers in 10 seconds. Find acceleration. It's a very simple numerical. Okay. Now, first of all, see. First of all, acceleration की unit क्या होती है? भाई acceleration की unit क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट क्या हमको यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है? नो। बट एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको पहले 56 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन कन्वर्ट द फाइनल आंसर इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड अपना सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट द गिवन, what is given in the question. Now what is given? Given is a train accelerates. Now this is u and this is v, right? U means initial velocity कितनी थी ट्रेन की? u is equal to 36 किलोमीटर per hour. So again, भाई 36 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो क्या करेंगे? What we do normally, what we do,
we multiply it by 5 by 18. We have already noted that thing in our points to remember, right? Now see over here. To convert kilometer per hour, we have to multiply it by 5 by 18. We have to multiply it by 5 by 18. Okay. Now we are going to multiply the 5 by 18. Here 36 into 5 by 18, that is 18 2 jar, 2 5 jar, 10 meter per second. Similarly, we have to convert final velocity, that is v, which is given 54 kilometer per hour. Again, we have to convert this. So 54 into 5 by 18. So 18 1 jar and 18 3 jar. Okay. So it is 15 meter per second. Time is how much? 10 seconds. Done. In 10 seconds, the train accelerates from 36 km per hour to 54 km per hour. Now, what is the formula of acceleration? Acceleration is equal to v minus u divided by time. So v minus u, v is how much? 15. 15 minus 10. 15 minus 10 divided by 10. 15 minus 10 is 5 divided by 10, which is equal to 0.5 meter per second square. नोटिस करना, यूनिट लिखना मत भूलना. यूनिट लिखना भूल जाओगे तो आधा मार्क कैंसिल हो जाएगा. Okay. Now I'm going to share you my next numerical that is related to T acceleration. It's a very important numerical. Now see, the question में कभी confuse मत आना. Whatever kilometer it is written first, you have to take as an initial velocity. Now see, what is written in the question? Now what is written in the question? A truck traveling at a 54 किलोमीटर पर आवर. अब जो ट्रक था वो ऑलरेडी 54 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था, तो ये क्या हो गया? U. It स्लो डाउन. अब उसने स्लो डाउन करने के लिए ब्रेक लगाया होगा. अब ब्रेक लगाया तो मतलब क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो क्या हो गया? ये किसका एग्जांपल है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन. और ब्रेक लगाने के बाद जब गाड़ी स्लो डाउन हुई तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 36 किलोमीटर पर आवर. सो आई कैन टेक दिस एज अ v. ओके. और टाइम कितना लगा? 10 सेकंड. अब वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन. नाउ सी, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में इनिशियली u और v को कन्वर्ट कर लिया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. मैं अब इस क्वेश्चन में आंसर को कन्वर्ट करूंगा इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. ओके. नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? Given is u is 54 kilometer per hour and v is 36 kilometer per hour. Okay. Now formula of acceleration is time दिया हुआ 10 seconds. Acceleration का formula क्या है? v minus u divided by time. V is how much? 54. Sorry, V is 36. 36 minus 54. मैंने बोला था ना आपको, V minus U, that is 54, divided by 10. Okay, now answer कितना आएगा? Account calculated. It's very simple. 8 1 minus 18. Minus 18 divided by 10, that is 1.8. That is 1.8. Okay. Now all of you, there is an announcement. As the meeting gets over, after a few minutes, you have to rejoin again because we have to do the numericals. Okay. You have to rejoin the meeting again because we have to do the numericals. Again, I am telling you,
you have to rejoin the Zoom meeting again as the meeting ends after few minutes because you have to do the numericals. Okay. Now the answer is minus 1.8 किलोमीटर पर आवर. अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. फॉर दैट व्हाट हैव टू डू? वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5 by 18. So what I can do, I will write simply minus 18 divided by 10 into 5 by 18. Right? 18 get cancelled. Answer is minus 5 by 10, which is equal to minus 0.5 meter per second square, which is equal to 0.5 meter per second square. Just wait for a moment. Yeah. 5 meter per second square. So this is the negative acceleration. वो आपको कैसे लगा मालूम नेगेटिव है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आया. क्या आया? नेगेटिव साइन indicates that it's a negative acceleration. Okay. Now I'm going to share one another numerical. It's also a very simple numerical. Now see over here. Now read the question very carefully. A train starting from rest. Now see what is given in the question. Starting from rest. अब कोई भी चीज जब रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो. रेस्ट मतलब आपकी पोजीशन क्या है? जीरो. उस समय आपकी बॉडी मूव हो रही है क्या? नहीं. तो आई विल टेक u इज इक्वल टू जीरो. अटेन्स द वेलोसिटी, और एकदम से उसने अपनी गाड़ी भगाई और एकदम से उसकी उस गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो गई? 72 किलोमीटर पर आवर. तो ये हो गया v इन 5 मिनट्स. ये आपको दे रखा टाइम. assuming that the acceleration is uniform. Acceleration कैसा है? Uniform है. Find the acceleration. It's a very simple. Okay, done. Again, we are going to convert first kilometer per hour into meter per second. So what is given in the question? Given u is what? Zero, because the train was starting from rest, means it is standing in one of the station. मतलब स्टेशन पे रुकी हुई थी. जब रुकी हुई थी तो उसका इनिशियल पोजीशन क्या हो गया? तो जीरो. तो u इज जीरो. तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. डन. v इज द फाइनल वेलोसिटी. वो कितनी हो गई? 72 किलोमीटर पर आवर. डन. We have to convert it into meter per second. 72 into 5 by 18 into 5 by 18. We have to cancel this. It's very simple. किससे करेंगे? 3 6 are 3 2 are 6, 3 4 are 12, and 6 1 are 6 4 are. So 4 5 are 20. 20 meter per second. Done. It's the final velocity of the train starting from rest. Now we have to calculate time कितना दिया हुआ है? That is 5 minutes. How much? 5 minutes. Now see, here the time is given 5 minutes. Again, we have to convert into seconds. 5 minutes. So 5 minutes को second में करना, तो 1 मिनट में कितने सेकंड? 60. 5 into 60. So that is 300 seconds. How many seconds? 300 seconds. Now, what is the formula of acceleration? Acceleration is v minus u divided by time. V is how much? That is 20. और u कितना था? 0. Right? So time is how much? 300 seconds. Done. तो इसको आप कंसिडर नहीं करोगे. नहीं करोगे, it is one and the same thing. 0 से 0 cancel. Done. यहाँ पर कितना आया? 2 1 जा 2 15 जा. Right. तो आंसर कितना है आपका? That is 1 upon 15 meter per second square. आप चाहो तो
1 को 15 से डिवाइड करो, और अदरवाइज अगर आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ देंगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. बट डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट. If you forget to write the unit, then your half marks will be deducted. Okay. Now I'm going to share my last